ठीक है सफा मम्मा did you try the homework? Yes, we did. Did it? चलो चलो I'll send it. ठीक है I didn't get it, so try sending So, it fast. ठीक है. अच्छा meanwhile just a second once more. अच्छा बस ये वाला पेपर ठीक है. This is the same one that's summer 1642. ठीक है. We were at question number 5. We're going to start with question number 5. तो अच्छा question number 5 and this was the most questions. ठीक है. I told you it was slightly lengthy last time. अच्छा, what is meant by excess oxygen that is easy के more than the required amount? And it remains unused, or there's going to be leftover oxygen at the end. Now look at the question. Remember one thing about gases, okay? There's one thing about gases is that when gases react, okay, you don't really have to calculate moles in gases. When gases react, their volume ratio and mole ratio is the same. It's same as mole ratio. What that means is that if you have a reaction in which, for example, N2 reacts with 3H2 and it produces 2NH3. So according to the mole ratio, it's one N2 reacting with 3H2 and producing 2NH3, right? It's 1, 3, 2, right? The volume ratio is going to be exactly the same. So if you have 50 cm cube of N2, so it will react with, it's 1:3, right? So according to this ratio, it's going to react with 150 cm cube of H2, right? And 1 produces 2, so that means it will produce 100 cm cube of NH3, ठीक है? So is this point clear that for gases, volume ratio and mole ratio is exactly the same? Is that clear? yes. Yes. Just coming back to this question, because this question is something similar to that. Now, he says that there's a hydrocarbon that's burning in excess oxygen. Okay, so I'm just going to write an equation. मुझे बताओ क्या होता है? What is the equation when a hydrocarbon burns? What is produced? When any alkene, any hydrocarbon burns, products क्या होते हैं? Mustafa, Marwa, any idea? Shanzeh? Like Mm, if I burn any hydrocarbon, ठीक है, हमेशा याद रखो कि it's going to produce carbon dioxide and water. Is that clear? Yes. yes. हाँ, और ये कि if it's burned in a limited supply of oxygen, or if there's incomplete combustion, then you're going to get carbon, and which is soot, and carbon monoxide as well. ठीक है? Carbon is the black substance, and carbon monoxide is the toxic gas that will be produced. ठीक है? अगर वो limited supply होगी ऑक्सीजन की. ठीक है? अच्छा, so this is your equation. Now he says कि जो ऊपर लिखा हुआ है, he says 10 cm cube, right? So he says 10 cm cube of the hydrocarbon burns, and it's burned in 100 cm cube of oxygen, which is in excess. ठीक है? तो add कितना किया? 100 cm cube oxygen, and he says after cooling to room temperature and pressure, there's 25 cm cube of unreacted oxygen. तो add कितना किया था? 100 cm cube oxygen, and at the end he has 25 cm cube of unreacted oxygen. तो इसका मतलब है how much oxygen reacted? कितना होगा? That will be 75 cm cube. ठीक है? Yes. क्लियर है ना बात? It's clear.
अच्छा, and there's 50 cm cube of carbon dioxide. ठीक है, वो 50 cm cube of प्लस देयर इज सम लिक्विड वाटर. ठीक है, सो अच्छा, वाटर के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड. द अदर वंस आर गैसेस. ठीक है, मतलब गैसेस हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. वाटर से खुद ही कहा इट्स अ लिक्विड. ठीक है, तो ये जो रेशो वाली बात है ना, दिस डज नॉट अप्लाई टू वाटर. ठीक है, तो उससे क्या है कि वॉल्यूम रेशो, नहीं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बताओ. तो smallest whole number ratio of volumes. So what is the whole number ratio in this case? 5. Yeah. The 5 से सारों को डिवाइड करें. No, it's, I think if we, नहीं, what's the it's ratio? 20. Oh, no, wait. 10, 75 or 50 का ratio. What is the smallest whole number ratio of this? Smallest. Volume of hydrocarbon will be 1, and then 7 for volume of hydrogen reacted, and 5 for volume of carbon dioxide produced. कितना फिर से बताओ. 175. 7.5. Yeah. नहीं, that will give you whole number ratio ना, तो वो 7.5, although that is fine. Okay. लेकिन वो मसला ये कि one of them is a decimal. तो Then we डबल, can convert the decimal into a whole number and then multiply it with the 1 and 5. मतलब multiply both. Yeah, simply divide everything by 5. Yeah. So you'll get 2 over here, Two. And then we'll get 15, and 5 से करोगे 10. 10, right? So it's 2, 15, 10, right? Yes. तो ये आंसर है इसका. अब वो कह रहे कि अच्छा, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो इज 50, 150, 100. Mole ratio, the Yes. equation mole ratio is the simplest ratio always, right? So you found your simplest ratio, 2 ratio, 15 ratio, 10, right? तो इक्वेशन पे अप्लाई कर लो. So this is 2, oxygen is 15, and CO2 is 10, and we have no idea what water is. ठीक है, Muza, based on the balancing that's in front of you, can you find out what the number over here for water is? क्योंकि फोर्थ का नहीं पता ना, so can you figure out the fourth one? मतलब इसको बैलेंस करके देख लो. How many oxygens do you have? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? That's 30, right? 30 oxygen. So there should be 30 on the right side as well. So यहाँ पे कितने हैं? That's 20, right? Then there'll be 5 H2O. ये 30 करना है ना. So yeah, because there's already 20, so 10. Oh yeah, whoops. ठीक है, क्लियर है. Yeah. Yes. अच्छा, तो वो जो unknown था, that has you've been able to balance it. ठीक है, based on by looking at the oxygen. ठीक है, that was the only thing that was missing. अच्छा, अब उससे आगे अगला जो tricky part है, that is, can you figure out what this hydrocarbon is? Can you find out the value of X? क्योंकि अब ये missing है ना कि X and Y, right? तो X क्या है? It's the number of carbon atoms, right? Yes. तो यहाँ पे कितने कार्बन है इस साइड पे, राइट साइड पे? But that's, you got 10 carbons, right? Clear? Right side पे there are 10 carbons. Yeah. तो लेफ्ट साइड पे भी 10 कार्बन होने चाहिए ना. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ यू वांट 10 कार्बन ऑन द लेफ्ट साइड? 5. ठीक है, तो 5 होगा because can you multiply by 2 as well. So x is 5. X has to be 5.
अब Y पे आ जाओ. Y is the number of hydrogens over here, right? So right side पे how many hydrogens you got? You got 20, right? You got 20 hydrogens on the right side. तो इधर Y क्या होगा? You need 20 hydrogens on this side as well. So Y is going to be Y is gonna be 20 करना ना. There are 20 hydrogens over here. that'll be 10. ठीक है, तो 10 होगा. So the answer, the formula of the hydrocarbon is C5 5H10. H10. ठीक है. अच्छा, अब ये question, this is like a very rare question. ठीक है. Make sure you sort of mark it so you remember it to practice later on as well. मतलब question 5 इस पेपर का. ठीक है. Most questions are not like this. So always remember, and this is specifically they normally ask it using a hydrocarbon. This is called combustion analysis. You figure out the formula of hydrocarbons using this technique. That you burn something, you figure out the volume ratio, like this much volume reacts with this much volume of oxygen and produces this much volume of carbon dioxide. Once you have the volumes, you can simplify those volumes and you can find the simplest whole number ratio. That will represent the mole ratio because mole ratio and volume ratio are, I told you, exactly the same. So equation के अंदर ना you'll be able to figure out the mole ratio or the moles of some of them. और कोई missing होगा ना वो वैसे ही निकल आएगा. ठीक है, which we did in this case. And then by simply balancing it, you can figure out what X and Y is. ठीक है. Clear question? Is this clear? Yes, it's clear. अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि अच्छा, now there is cracking used to convert long chain hydrocarbons into shorter chain alkanes and alkenes. Decane can be cracked. तो बताइए, cracking is literally like breaking a large molecule. उसको साथ साथ रिवाइज भी कर लेते हैं. एक सेकेंड. किधर गया ऑर्गेनिक? 1 second. अच्छा, cracking एक quick revision. ठीक है. वो हमने कहा था कि crude oil से you get all these molecules. ठीक है, you heat it, you evaporate it, and the larger molecules have higher boiling points, so they condense quickly, and the lighter molecules, the smaller ones, they condense as the particles rise. They condense at much later stages. ठीक है. These large molecules and they're not very useful because they don't burn easily. They're not very flammable. They have high melting and boiling points. They're very viscous. तो आप क्या करते हो? आप क्रैक करते हो. You take those big molecules and you break them into smaller pieces, alkanes, alkenes, and hydrogen gas. और उसका जो टेम्परेचर रखा होता है ना वो 450, around 450 होता है. ठीक है. And you have Al2O3 or SiO2 as catalyst. और cracking में literally the molecule is broken down into pieces. ठीक है. The only thing is, and it's a random process. The only thing you have to remember is कि सारे pieces they must add up to the bigger molecule. ठीक है. तो यहाँ पे बताओ कि दूसरा molecule क्या produce होगा if you crack this. What is this other molecule that's going to be produced? क्या होगा? C10H22. It's gonna be C7H24. हम्म, No, C7H14. No, wait. 22 में से 6 निकालो. 16. Whoops. 16. ठीक है. What's the meaning of the term unsaturated? Unsaturated means it has only one carbon bond. Unsaturated. Single carbon bond. नहीं, alkanes क्या होते थे? They were saturated, Single right? carbon. Yeah.
So it's Alkane, double bond. Carbon has double bond. तो alkenes पे आना alkenes की तरह. Alkenes were unsaturated. Unsaturated means you got a double bond, carbon carbon Bond, double. yeah. ठीक है. तो so you got at least one. Shanze clear? Yes. Acha, how do you test for alkenes? How do you test for unsaturated compounds? क्या test the alkenes? The bromination. ठीक है. So alkenes underwent addition reactions, and the main addition reaction which you can test an alkene is its bromination. Double bond जहाँ पे भी होगा, the bromine is going to get added to the double bond. ठीक है. And it's red, brown, orange Br2 decolorizes. ठीक है. तो टेस्ट में लिखोगे Br2 aqueous, and the result is that the red, brown, or orange Br2 decolorizes because it reacts and gets used up. अच्छा, अगला part. What type of polymerization is this? What type of polymerization do alkenes undergo? मतलब प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बना ना. They undergo, wait, I forgot the name. Polymerization. Alkenes से याद था, all reactions are called addition reactions. ठीक है. तो उसमें you've got hydrogenation, hydrogen gets added. You've got hydration, water gets added. Hydrogen halides, HCl, HBr, etc. They get added to the double bond. और फिर addition polymerization. Addition polymerization, alkenes undergo addition polymerization. ठीक है. कि वो double bonds, all the molecules, they double bonds, they turn into single bonds and they start joining up. प्रोपीन का भी यहाँ पे होगा, ये प्रोपीन का बना हुआ ना. तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रोपीन का ड्रॉ करना है तो क्या करना है कि डबल बॉन्ड, दिस इज प्रोपीन 3 कार्बन एटम्स, राइट, एंड प्रोपीन हैज अ डबल बॉन्ड. तो मैंने कहा था कि व्हेन यू हैव अ डबल बॉन्ड, तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पे डोंट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. इफ देयर इज एनीथिंग, उसको बेंड करके ना ऊपर ले जाओ. ठीक है. So for example, you got a CH3 on the left side. So what you did was CH3 को bend करके you just took it upwards. ठीक है. H को भी bend करके right side से you made it point upwards. उसके लिए, because then the monomers can join up easily. Then you're going to line them up. The double bonds are going to turn into single bonds and they will start interlinking with each other. ठीक है. And that's polypropylene. या आपकी plastic bottles वगैरह ना, Nestle, Coke, etc. They are made out of polypropylene. So the type of polymerization, that's addition. अच्छा, reduce the maximum mass of polypropylene that could be produced from 1 kg of propene. अच्छा, इसका ये trick question है. ठीक है, क्योंकि इसमें you don't have to do any calculation. The idea of addition polymerization is that you have monomers and they all join up to form one big chain. तो जो इसकी mass होगी वो exactly इसकी mass होगी. I mean, the mass is not changing. मतलब polymerization में you've got monomers and they all join up to become polymers. ठीक है. तो if you add up their mass and their mass, it's going to be exactly the same. Addition polymerization has no loss of mass because things are simply getting added up. So there are no extra molecules being produced. There's no loss in mass. ठीक है. तो इसका आंसर होगा it's going to be exactly 1 kg. क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है. मतलब वही exactly वही mass होगी. Is that clear? Yes, yes. अच्छा, और फिर empirical formula वाला भी कि the empirical formula going to remain exactly the same क्योंकि propene is C3H6. What is the empirical formula? The empirical formula is going to be क्या हो गया 3:6 का रेशियो क्या होगा? It's going to be 1:2, right? तो Yes. the ratio would also remain this exactly the same. कि अगर मैं उस पे जाऊँ ना पॉलीप्रोपीन पे कि
ये C3H6, 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 right? If you add them all up, the ratio is still 3:6. I mean, it's still going to be 1:2. Is that clear? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज Yes. तो हो नहीं रही ना, बीच में से माइनस हो रही है, ठीक है? सो यू गोना गेट एग्जैक्टली द सेम सेम रेशो। दोनों का रेशो सेम होगा। ठीक है, क्लियर है बात? Yeah, it's clear. अच्छा, अगला वाला, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड। अच्छा, ये वाला पार्ट अब बोल दो, ये वैसे याद कर ही लो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। जिंक सल्फाइड इज द ओर, ये मेटल्स का, ठीक है? अच्छा, रिमेंबर कुछ चीजें सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड दे डू टेंड टू आस्क थिंग्स आउट ऑफ योर सिलेबस एज वेल, तो स्लाइटली आउट ऑफ योर सिलेबस, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अगर वो लिंक हो रहा है ना, दे गोना आस्क थिंग्स अबाउट इट, ठीक है? ऐसे ये बोला। तो जस्ट रिमेंबर जिंक की एक्सट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि द एक्सट्रैक्शन इज वेरी सिमिलर टू आयरन एक्सट्रैक्शन, ठीक है? क्योंकि उसको भी रिड्यूस करते हैं कार्बन से। तो वो कह रहे हैं कि हाउ इज जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम जिंक ब्लेंड, तो वो यू बर्न इट, रोस्ट इट इन एयर एंड यू गेट जिंक ऑक्साइड, ठीक है? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो मोल्टन ZnS और हमेशा इक्वेशंस देना केमिस्ट्री के अंदर, एंड यू नीड टू बैलेंस इट, तो आई गेस डबल करके देख लेते हैं कि नाउ you've got 6 oxygens, so 3O2, ठीक है? ऐसे नहीं, केमिकल इक्वेशन उसने मांगी थी अगले स्टेप में, तो वो हो गया। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक कोक इज, क्योंकि आयरन के ब्लास्ट फर्नेस की तरह है, तो इवन दो इफ इट्स नो लॉन्गर इन योर कोर्स, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जिंक और आयरन रिएक्टिव सीरीज में साथ साथ हैं, देयर एक्सट्रैक्शन इज काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है? Hot air is blown at the bottom of the surface. Zinc has a melting point of 420 and a boiling point of 907. The temperature inside the furnace is over 1000. Explain how zinc oxide is converted into zinc. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के का वो जनरल डिस्क्रिप्शन पहले मैं दे दूं कि हाउ आर मेटल्स एक्सट्रैक्टेड। Remember, the metals that are lower in the reactivity series compared to carbon are extracted using reduction with carbon, क्योंकि carbon is more reactive, तो कार्बन क्या करेगा, जिंक से ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेगा। It does the same thing with iron as well in the blast furnace extraction, ठीक है? So explain how zinc oxide is converted into zinc. Your answer should include details of how the heat is produced and equations for all the reactions you describe. तो पहला तो जिंक किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो वही है कि कार्बन goes and reacts with zinc oxide and produces, मतलब कार्बन उससे ऑक्सीजन छीन लेगा, it will form carbon dioxide, and you need to balance this, 2 oxygens, 2 zincs, 2 carbons। अब उससे फर्दर डिटेल मांगी हुई है कि हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो सिंस द एक्सट्रैक्शन इज वेरी सिमिलर टू आयरन एक्सट्रैक्शन, आयरन में ब्लास्ट फर्नेस में हाउ वाज हीट प्रोड्यूस्ड जब कोक ऐड करते थे? हाउ वाज हीट प्रोड्यूस्ड कि द कोक वाज बर्न्ड by when hot air was pumped into it, and that was the one thing that was producing all the heat। तो हीट प्रोड्यूस्ड, तो उसमें है कि कोक बर्न्स एंड C+O2 CO2, और फिर इसमें ये भी ऐड करना है कि वो जो कोक ऐड किया ना, व्हाट हैपेंस टू इट, वेयर इज द coke further reacts with carbon dioxide and reducing it and turns it into carbon monoxide, क्योंकि वो
एयर इतनी कम होती है and the coke carbon that's added so much ये coal है basically that incomplete combustion happens. तो coke further reacts and produces carbon monoxide. So it's not only carbon that reduces zinc, it also includes carbon monoxide. वो भी जाके ना zinc oxide के साथ रिएक्ट करता है, उससे ऑक्सीजन छीन लेता है, जिंक बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स। और इसकी हेडिंग दोगे दिस इज रिडक्शन विद कार्बन दैट्स हैपनिंग। ठीक है। अच्छा ये क्लियर है, ये इज दिस क्लियर? शादी सफा बरवा, इज दिस क्लियर? Yes. और मैं फिर से वो रिमाइंड कर दूं कि ऑल्दो दे टॉक अबाउट जिंक बट द होल एक्सट्रैक्शन दे डिस्क्राइबिंग इज ऑफ आयरन। ठीक है। आयरन एंड जिंक आर काइंड ऑफ एक्सट्रैक्टेड इन द सेम वे। ठीक है। आयरन का जो ओर होता है दैट्स हीमेटाइट, और उसमें तीन चीजें ऐड करते हैं। लाइमस्टोन फिर आप ऐड करते हो एंड में टू रिमूव द impurities which are sand. The limestone decomposes and the basic lime then goes and reacts with the acidic sand and forms a calcium silicate, which is a slag which floats on the top surface of the molten iron. तो वो टॉप सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है उसके। अच्छा बट एनीवेज अगला जो पार्ट है ना वो है कि जिंक की मैंने नोट्स भेजे हुए हैं। ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ द एक्सट्रैक्शंस। ठीक है। यू गेट बिग क्वेश्चंस, Yes. you get big questions on extraction of metals। ठीक है। अच्छा why is zinc produce a gas? ठीक है वो ही पूछ रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर उसने क्या बताया? दैट्स 1000 सेंटीग्रेड while the boiling point of zinc is 907। so तो obvious है कि the temperature 1000 centigrade is higher than its boiling point। That's it। ठीक है। that's higher than the Yes. boiling point। अच्छा ये कन्वर्जन क्या होती है गैस से मोल्टन जिंक? what would you call this conversion? Well, गैस टू मोल्टन जिंक क्या होता है? Molten क्या होता है? Liquid, right? So what is this Yeah. conversion? Gas to liquid। Condensation. ठीक है। So that's condensation। ठीक है। तो वो सिंपली कंडेंसेशन है। अच्छा रस्टिंग का क्वेश्चन आ गया। वो कह रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ स्टील कैन बी प्रिवेंटेड इफ यू कोट इट विद अ लेयर ऑफ जिंक। तो ये रस्ट प्रिवेंशन। ठीक है। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ रस्ट प्रिवेंशन। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। यू हैव टू राइट दिस इन डिटेल। तो रस्टिंग इससे पहले था वाटर के साथ रिएक्शन कहेंगे। अच्छा सो रिमेंबर रस्टिंग इज दैट iron ends up reacting with water. You need moisture and you need air, and you get this red powder which is either Fe2O3 or FeOH3। ठीक है। आयरन 3 का कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। दैट्स द रेड पाउडर एंड दैट इज रस्ट। रेड या ऑरेंज पाउडर। हाउ डू यू प्रिवेंट रस्टिंग? व्हाट द चीफ ways are that you paint stuff so that it does not come into contact। ये वो है कि they don't come into contact with water and with air। तो ऑयल कर लो, बाइसिकल चेन मशीन्स को ऑयल करते हो आप। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेट कोटेड विद अनरिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है। तो उससे रस्ट प्रिवेंशन होगी। But then the bigger, larger scale पे you use sacrificial protection, which is that like if you want to prevent a shift from rusting, you can't paint all of it or you can't, but obviously वो वाले methods fail हो जाएंगे।
ठीक है, so you use some reactive metal like zinc and you attach it to iron. अब जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है, अच्छा, यू कैन आइदर कोट इट और यू कैन जस्ट सिंपली प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद आयरन, एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वुड बी सफिशिएंट। लेकिन अगर उसको कोट भी कर दो, यू गोना गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो सिंस इट्स मोर रिएक्टिव, दैट मींस जिंक हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स ऑलवेज लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है, ठीक है। सो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली and a lot of electrons are going to get produced, and those electrons would travel towards iron. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई ऑक्सीजन या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने, इफ इट कम्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, so it's those electrons are not coming from iron, they're actually coming from zinc, and zinc is the one that is getting oxidized. Oxidized का मतलब है losing electrons, so zinc is the one that is turning into ions, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखनी है, so what we're going to write over there is कि explain in terms of electron transfer। पहले तो बताओ कि zinc is more reactive. So since it's more reactive, it gets oxidized or loses electrons easily. अच्छा, उसके बाद है कि electrons will travel from zinc towards iron. तो ये जो एयर और वाटर है ना, ऑक्सीजन या वाटर, ठीक है। Yes. तो oxygen and water would get reduced or gain electrons, and they will get reduced. But iron will be protected. Fe बच जाएगा, since since क्या रीजन है कि electrons are coming from so Fe will be protected since electrons are being provided by zinc. Fe will not be the one that will be losing electrons. Hence, zinc gets oxidized preferentially. ठीक है, क्लियर है? चांद्र क्लियर है? सफा परवा क्लियर है? Yes, clear. Yes. ठीक है, रिमेम्बर ये मेटल्स वाले जो नोट्स है ना, ये बहुत सारे याद रखना है इसमें, ठीक है। there's understanding, but you have to remember a lot of stuff in those notes, ठीक है। अगला, sample of steel is added to dilute hydrochloric acid. An aqueous solution of iron 3 chloride, iron 2 chloride is formed. When a sample of rust is added to dilute hydrochloric acid, an aqueous solution of iron 3 chloride is formed. Aqueous sodium hydroxide is added to the solution of iron 2 chloride and iron 3 chloride. तो ये बताओ क्या टेस्ट होता है आयरन 2 और आयरन 3 का when you add NaOH, वो जो हमारा कहीं टेस्ट फॉर कैटायन एनायंस, ठीक है। तो iron 2 you get a green precipitate insoluble in excess, iron 3 you get a red brown precipitate which is insoluble in excess, ठीक है। effect of adding aqueous NaOH, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो इधर आया आपका पास iron 2 would be green precipitate and this is going to be your red brown.
और दोनों insoluble है। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि पोटेशियम solutions of iron 2 chloride and iron 3 chloride were added to solutions of potassium iodide and potassium magnate 7. The results are shown. What types of substance cause potassium iodide solution to turn from colorless to brown? अच्छा, ये पोटेशियम, ये वही एसिड बेसिस वाली जो शीट है ना, इसमें तो नहीं लिखा होगा, लेकिन वो एक और थी, एक और डेटा शीट थी, ये वाली। अच्छा, potassium, remember there are two oxidizing agents and there are two reducing agents that you have to remember. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, potassium magnate 7 purple to colorless, that's a very powerful oxidizing agent, ठीक है? And there are two reducing agents, SO2 and I minus 1। I minus 1 की I के अंदर ना I minus 1 होता है, ठीक है? So I minus 1 is a very good reducing agent। तो ये चार चीजों का ना याद रखना है, ठीक है? You have to remember potassium dichromate 6 and you have to remember about potassium magnate 7। They're both very good oxidizing agents, and you have to remember two good reducing agents. One is sulfur dioxide and the other one is iodide, ठीक है? इन दोनों का पता करना है। अच्छा, तो पहला वाला है ना, पहला वाला जो है ना, that's a good reducing agent। और ये जो दूसरा वाला है ना, that's your very powerful oxidizing agent। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ना कौन सी चीज रिएक्ट करती है? रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट्स विद एन ऑक्साइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब है ये जो आयरन 3 क्लोराइड है ना, that must be an oxidizing agent, ठीक है? और Yes. ऑक्साइजिंग एजेंट जो होता है वो किस साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट्स विद अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट मींस दिस आयरन 2 क्लोराइड मस्ट बी अ गुड और मस्ट बी बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये क्लियर है ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है वो उल्टा होता है ना, कि एक अगर like if I react Na with Al3 plus and you get Na plus 1 and Al, right? So Na is the one that's losing electrons, ठीक है? तो it loses electrons and Al is the one that gains electrons, ठीक है? तो अगर एक ऑक्साइज हो रहा है, loses electrons means oxidize हो रहा है, the other one is getting reduced। The one that gets oxidized is your reducing agent and the one that gets reduced is your, इनके नाम उल्टे होते हैं, ठीक है? तो ये याद रखा कि if one of them is behaving as a reducing agent, the other one is definitely going to be, जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, that must be an oxidizing agent। और अगर एक ऑक्साइजिंग एजेंट होगा, the other one must be the reducing agent। Is this clear, this part? Yes. तो बस उसने कहा है कि what type of substance would cause potassium iodide to react, तो वो क्या होगा? An oxidizing agent, right? Yes. Clear है? And what type of substance cause potassium magnate 7 solution to turn from purple to colorless? That must be a, तो it must be a reducing agent, ठीक है? Clear है? अच्छा, which ion in iron 3 chloride solution causes potassium iodide solution to turn from colorless to brown? तो अच्छा, colorless to brown, right? अच्छा, एक तो, Yeah. और अगले में which ion in this one, remember it's got two ions। अच्छा, अब ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी डिटेल में। Iron 3 chloride has two ions, one is iron Fe3 plus, the other one is Cl minus 1, ठीक है? अब
पोटेशियम आयोडाइड के साथ ना इट्स बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खुद क्या होता है? इट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है? द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। यानी इसका मतलब है इसने ना इलेक्ट्रॉन गेन करना है। रिड्यूस का मतलब है इट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेंबर दिस, Cl-1 जो है ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। इट कैनॉट गेन further electrons. It's Fe3 plus, that's the one that's going to gain electrons. Positive ions are the ones that will attract electrons and that are going to gain electrons, ठीक है? तो Fe3 plus इसका आंसर है कि it's Fe3 plus, that's the one uh that's going to gain electrons. Is this clear? Yes. Clear. अच्छा, दूसरे, which iron causes potassium magnet 7 solution to turn, बल्कि इसका ना ज्यादा सिंपल में वैसे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत दफा आता है। Remember, you've got Fe3 plus and you've got, ये मेरे ख्याल से वैसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए। Now remember one thing, कि transition metals, they have variable oxidation states. Fe3 plus can gain an electron and turn into Fe2 plus, and vice versa. Fe2 plus can lose an electron and turn back into, so they can switch between oxidation states. So they can gain electrons forward or they can lose electrons. तो यहाँ पे ना यही हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड डाला था तो वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब है इट एंडेड अप गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Ki did that. Ki was a good reducing agent, तो Ki ने उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया। And when you add potassium magnate 7, that's an oxidizing agent. So potassium magnate would make it lose electrons. Oxidizing agent जो होगा वो उसको ऑक्साइज कर देगा, इट विल मेक इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो भी काम हो रहा है ना वो आयरन के साथ ही हो रहा है। इट्स आयरन 3 दैट्स गेटिंग रिड्यूस्ड, और अगले वाले में आयरन 2 क्लोराइड है, सो इट्स आयरन 2 दैट्स द वन दैट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इट्स टर्निंग इनटू Fe3 प्लस, ठीक है? ये बल्कि याद ही रख लेना, क्योंकि ऑल दिस क्वेश्चन में ना थोड़ा डिटेल में आ गया। लेकिन मैं फिर से एक दफा गो थ्रू कर रहा हूँ। रीडॉक्स इज काइंड ऑफ सिंपल, लेकिन क्योंकि वो इतनी दफा टर्म्स यूज हो रहे थे, काइंड ऑफ गेट्स कंफ्यूजिंग। Remember, when something loses electrons, that's oxidation. That means it's a reducing agent. When something gains electrons, that means it's got reduced. That means it's behaving as an oxidizing agent, ठीक है? Reducing agent always reacts with an oxidizing agent. एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, the other one is bound to gain electrons, ठीक है? So the two of them are always present together. So if the one of them is a reducing agent, the one that's reacting must be the oxidizing agent. If one of them is the oxidizing agent, the other one that's reacting is the reducing agent, ठीक है? और ये मैंने बता दिया था Fe3 प्लस का, कि ट्रांजिशन मेटल्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो एक ही चीज के साथ हो रही होती है। द सेम आयन टर्निंग इनटू द अदर आयन, then it loses electrons, turns back into the other ion, ठीक है? Depending whether you've added a reducing agent or whether you've added a oxidizing agent, ठीक है? Is this question clear? Yes. चलो ठीक है, पेपर भी खत्म हो गया। We are done with this paper, ठीक है? लेकिन ये मेटल्स वाली शीट जो है ना, ये जो नोट्स पेज है, मेक श्योर, और ऑर्गेनिक भी, क्योंकि पीपल फॉरगेट इट वेरी क्विकली। तो ये दोनों शीट्स जो है ना, मेटल्स वाली और ऑर्गेनिक वाली, ठीक है? इसको बैठ के रिवाइज करते रहा करो, ठीक है? तो चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है? Okay, Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah